ସେଠି ବି ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି ମୁଁ। गुड इवनिंग जी देखुच आयसा जदि देखुच मो आवाज शुभुची लिंक टा शेयर कर दबो लिंक टा सांग माने टिके ग्रुप रे शेयर कर दबो एम आई ऑडिबल गाइस मो आवाज क्लियरली शुभुच समस्त को ओके गाइस गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग केमती अच्छा मो आवाज शुभुची समस्त को ओके तो आज ज्योग्राफी रो सेशन स्टार्ट करिया ज्योग्राफी केमती अच्छा समस्ते
ओके आयशा वेरी गुड ओके समस्ते रेडी तो आज स्टार्ट करिए ज्योग्राफी राइट तो एमती दिल काली नेक्स्ट काली जदि जे रिवाइज करके आसीबो रिवाइज करी आसीबो इकोनॉमिक्स आई विल टेक इकोनॉमिक सेक्शन टुमोरो देन एई भलिया मो करंट अफेयर सेक्शन देन तापर रहइबो एमती सबु माने बारंबार ताको रिवाइज कर देबी सो संडे मु दीटा सेशन नेबी संडे दीटा सेशन नेबी तुमरो तो एटा प्रिलिम्स रो बेसिकली एमसीक्यू ओपीएससी रो सिविल सर्विस रो समस्ते लाइक जरूर कर देथिबो एवं सांग साथी सहित लाइक माने शेयर जदी कर देथिबो सो दैट समस्ते ये अपॉर्चुनिटी पाइबे देखिबे एंड ऑनेस्टली से एग्जाम पाई प्रिपेयर करि परिबे so which of the following issue not taken into account while discussing the concept of sea floor spreading while discussing the concept of sea floor spreading volcanic activity along mid-oceanic reaches, distribution of fossils in different continents, the types of normal and reverse magnetic field observed in rocks of the oceanic floor and edge of rocks from the ocean floor. So, concept of sea floor spreading. Concept of sea floor spreading. समस्ते ट्राई करो पाखापाखि 12 जन देखुच बट शेयर करिच माने लाइक समस्ते करिन कमेंट सेक्शन देखुची तो जा स्क्रीन ओपीएससी प्रीलिम्स 21-22 रे तो B is the correct one. Distribution of fossil in different continent. Sea floor spreading. Don't ki which of the concept is not taken. Fossil na niya tala volcanic activity niya itala. Medium oceanic reach along with medium oceanic. Then stripes of normal and reverse magnetic field observed in the rocks of the oceanic floor. Edge of the rocks from the ocean floor. Then sea floor spreading जोटा कि geological process which tectonic plates that is large slabs of earth जोटा कि split करे from each other. The sea floor spreading and other tectonic activity process are the result of mantle convection. This is very important point. So sea floor will occur at a divergent plate boundary as tectonic plates slowly move away from each other. Heat from the mantle's convection current makes the crust more plastic and less dense. Less dense material rises, often forming a mountain or elevated area of the sea. So sea floor spreading mainly focus on formation and movement of oceanic crust at the mid-oceanic region, not the distribution of fossil across the continent. So ये focus करे formation and movement of oceanic crust and which is more relevant to plate tectonics and continent जोटा कि continent drift. So sea floor spreading ର model तो देखो रिजेस ହେଇची एपटू स्प्रेड होची ओसेनिक क्रस्ट ये स्प्रेड होची डीप सी ट्रेंच रि मध्य कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये थी कन्वेक्शन करंट थ्रो देखो एमती सबडक्शन होची एठी and this is the mantle part then the stream which do not follow the regional slope and drain across the geological structure are called जल्दी जल्दी करवा समस्ते जल्दी जल्दी आंसर दियो जल्दी जल्दी करवा समस्ते जल्दी जल्दी आंसर दियो काली एनवायरनमेंट करवा काली आज काली इकोनॉमिक्स नो एनवायरनमेंट रिवीजन करी आस्तिबो काली
So the stream which do not follow the regional slopes and drain across the geological structure are called subsequent stream, resequent stream, sequent stream, and consequent. रीजनल स्लोप को जी फॉलो करेनी जल्दी जल्दी जवाब दियो C is the correct answer. Very good. Insequent. So discordant or insequent जो कहा जाए ठीक है ये ला consequent ये ला insequent and oblique एठी भी देखी पारो ये resequent ये obsequent subsequent. So the drainage system रे ये part it is found in stream which do not follow the regional slope. They are not adjusted to the geographical structure. माने स्लोप अनुसार से फॉलो करेनी दे आर कॉल्ड इनसिक्वेंट स्ट्रीम द discordant or insequent drainage system is further divided into antecedent and superimposed drainage. According to Weber, the most important factor in the locating of factory that actually geography optional जो Weber model but दे देची questions OPSC रे. C is the correct answer. So Sunita was right. सुनीता आयेशा ठीक थिलो तुम गोटे काम कर क्वेश्चन नंबर करके आंसर दियो हैं क्वेश्चन नंबर लेख एवं तापर आंसर दियो एमती बेटर हबो हम एवं ट्राई करियो जल्दी जल्दी आंसर दबो जल्दी जल्दी आमे जीवा फॉर 50 क्वेश्चंस विल डू. So according to Weber the most important factor in locating factory located by कोन most important factor Weber बट एटा Weber न जानले भी गोटे तुम नॉर्मली कहि दी परिबो नॉर्मली गोटे फैक्ट्री नॉर्मल जनरल ज्योग्राफी पढ़ी यदि कहि परिबो गोटे ला ट्रांसपोर्टेशन वेरी इंपोर्टेंट मो जगह रे करबा लोकेशन के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट गाइस. Yes 3B right Aisha very good. So according to Weber the three main factors ये नहीं थे गोटे ला इंडस्ट्रियल लोकेशन पाई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लेबर कॉस्ट एंड एग्लोमेरेशन. So location very important. Match the following and choose the correct one. Merchants meander county हुए meandering glacial saddle eoline या stock fluvial and this is also basically part of तुम्हारो cycle of erosion part किछि अछि एथिरे. सारे नंबर जवाब दियो समस्ते क्विक 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 जते क्विक करबा आमे सते मैक्सिमम क्वेश्चंस करि परिबा. एमती कौन मु देखुची किसी पिला जी की ओएस हब रे जो माने से माने टेस्ट दउना थी ऑफलाइन टेस्ट होची टेस्ट जरूर दियंतु वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो माने टेस्ट दउना थी मु समस्त कहबी ऑफलाइन आसी दियंतु आ निज को 30 मार्क खान भाबंतु नहीं एकाथरे एग्जाम रे जाई कि आमे देई देबु एग्जाम रे हेई जो के खाली समय बर्बाद करे छड़ा वर्ष वर्ष समय एमती बर्बाद होतु. Be careful and try to give test and that should be offline haba darkar because you are giving the exam in offline mode. अरे से भलिया एनवायरनमेंट पाइबो नाही ना से भलिया तुम्हें माहौल पई रेडी हो. सारी नंबर डी यस. तो देखिबा 1 एओलाइन वर्चन्स एओलाइन ये रे फॉर्मेशन मेंडरिंग काउंटी हुए मेंडरिंग रियल लैंडफॉर्म सेटल काउंटी फॉर्मेशन हुए ग्लेशियल लैंडफॉर्म एंड स्टॉक बेसिकली रे फॉर्मेशन के. तो वर्चन इज मूविंग सैंड ड्यून कि सैंड ड्यून्स द शेप ऑफ द क्रिसेंट भलिया
ଏଇଭଳିଆ କରିଥାଏ। So birds are primarily exposed to the wind from one direction. They live in sandy desert. Meander, ये meander is when water flows in a curvy or bendy path like a snake. जोटा कि कर भलिया एमती the river makes its way through the area. It is relatively flat and it often develop a bend. It erode way through the path of least resistance. Meandering जानिछो समझ meandering हवा. Saddle is the lowest area between the two highland. देखि peak ରୁ ଏଟା ଭିତରେ ତାର lowest point the peak ଭିତରେ which was two wings which span the divide the line between then by crossing the divide and angle and so concurrently local high point in the land surface fall in the lower direction stock or sea stack କୁହାଯାଏ stock or sea stack କୁହାଯାଏ a geological landform consists of steep and often vertical column sea near coastal area देखो देखो ଏଟା ହେଲା meandering ଏଟା ହେଲା versions dunes and dunes ଏମିତି distant ବଢିଆ formation ହେଇଛି sea stack ଏଟା ହେଲା stack या आर्क एटा हला सी कैव एटा सब देखिथियो दीज आर वेरी वेरी बेसिकली एटा हला सैडल ओके तो नाउ यू विल गेट जोंटा कि लेखा एते हिची तुम बुझी पार नथो ठीक से एटा भल से बुझी पारथबो गुड इवनिंग सुनील यस वेरी गुड हियर द population distribution of rural and urban area can be shown by the population distribution of rural and urban area can be shown by basically यदि क्लास 8 बोधे क्लास 8 रो जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी रो यदि पढ़ी ठीक से सही आंसर दे परियो आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स गाय वेरी वेरी फास्ट डू इट पांच नंबर सी इज द करेक्ट आंसर गोटे आंसर प्रथम पाइली मु तापर आउ जे दउथो द यस आईएसआर शत्रुजीत यू आर राइट वेरी गुड शत्रुजीत कोन देखा नहीं so while showing population distribution rural population is shown by dots and circle are used for the urban population so circle are used करा जाए urban population the distribution of geography water sources transport system सब पाइबो दे which are the following lake with their places which are the following lake their places का or bill এটা भी very usual octac homework is also very easy one जवाब दो भाई जल्दी 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 कौन आंसर हम एटा देख चिल्का लेक बहुत इजी ओडिशा दीपरविल ओडिशा आई देन चिल्का कौन दीपरविल चिल्का ओडिशा है आसाम है लोकटेक मणिपुर है यार कन्वर सिंह हिस्ट्री पढ़ी कन्वर सिंह ताकू यूज करी परिबेटी ना नहीं नंबर सी वेरी गुड डन वेरी गुड वेल डन तुम्हें जानिच कौन कौन चिलिका लेक हो दीपरविल हो तुमर लार्जेस्ट लोकटेक लेक हो वेरी वेरी इंपोर्टेंट which stage of demographic transition the highest population growth rate is observed which stage of demographic transition एटा को जल्दी जवाब दियो stage of demographic transition the highest population rate is observed the highest population growth rate is observed
stages ro first stages, second stages, third stages, and fourth stages. Momota, right? You are right. Seventh रे fourth होगा. Yes, ऐसा C नो. Second, sorry, D होगा. D होगा. Fourth stage. First stage ना second stage. Demography transition. क्या क्वेश्चन आसी थिला. Second stage होगा ना fourth stage होगा. कौन कहूँ चुकुआ. So this is second stage. Second stage. The theory of demographic transition deals with transition from high to low birth rate and death rate, low birth rate and death rate. The second stage of demographic transition characterized with population explosion. So highest population's growth age. So population explosion refer to the situation when population increases due to high birth rate and low death rate. Stage 1, high fluctuating. Stage 2, early expanding. Basically, the second stage is sharp decline death rate causing population growth rapidly. And stage 3, late expanding. Third stage see the birth rate fall, which slows down the population growth. Birth rate fall. Fourth stage, low fluctuating. The fourth stage, both birth and death rate are low, resulting in falling and then stable population. And fifth stage, declining. Fifth and final stage show little population change, although it's somewhat ambiguous. So ये थिला तुम्हारा overall demographic transition and demography model. Yes, fourth रे stagnant. जोटा कि दीटाक ल होगला तो बढ़िबो केमती. आमर एठी डिस्कशन कोन क्वेश्चंस पचार छी कहलो. हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ माने जोटा कि एक्सप्लोजन हेची सेकंड स्टेजेस रे. जोटा कि सेकंड स्टेजेस रे कोन हेतिला. डेथ रेट डिक्लाइन हेतिला, कम डेथ हेतिला, बट बर्थ रेट अधिका हेतिला. Which of the following country is the largest rice producing nation in the world? एटा तो इजीली कहि दे परिबो. चाउଳ किए खाई सबटु बेसी. ऑस्ट्रेलिया खाती ना, यूएसए खाई ना, इंडिया खाई ना, चाइना खाई. को जल्दी को. जल्दी. अरे इंडिया रे बहुत सारा जगह अच्छी जे कि चावल कम खाती. चाइना. चाइनीज. चाइनीज खाना रे कौन थाए. डी डी 8 नंबर डी. राइट. राइट आयशा. इंडिया सेकंड. यस शत्रुजीत. ममता वेरी गुड. ओके. Which of the following mountain peak ranges in the which of the following location? Lodaveta peak, Upgad, Gurushikar, Anamudi. Anamudi या Anaimudi? को जल्दी जवाब दियो. 9 नंबर. आयशा जल्दबाजी रो जवाब दियो नी भूल भाल हो. जल्दबाजी रो जवाब बिल्कुल दियो नी. आंसर भूल भाल होवार चांसेस बढ़ी. जल्दी जल्दी आंसर दवा दरकार नहीं. देख देखिकी दियो. देख गदबाटा कौटी अच्छी. नीलगिरी. उपगढ़ कौटी अच्छी. सतपुरा रेंज. गुरुशिखर कौटी अच्छी. आरावली. अनाईबड़ी. तो गदबाटा पिक एलिवेशन
7 above the sea level, and highest peak, highest point of Nilgiri mountain range, name of the Dadavata in language. Near Pachmari, second Dhupgad, Pachmari, the highest peak in central India. Mount Dhupgad located in Mahadev Hills, Satpura range. Guru Shikhar, Mount Abu रे पाइबो जोंटे कि आरावली हिल्स रे पाइबो Mount Abu 15 kilometer. Then Anaimudi, जोंटे कि highest peak of Anamalai Hills are Western Ghat रे part रे पाइबो. Anaimudi located in Kerala. Anaimudi also known as rest of yeah. Okay, ये सबू range देखी दियो. Western Ghat. So इठी हला Anaimudi, and सौथी बड़ी hills गुड़ा आमर आसीबो. Okay. Which of the following tribe is not found in Madhya Pradesh? Following tribe is not found in tribes not found. Not found question. Doors, stones, wheels, Jarawas. Jarawa not found. He is the correct answer. So Jarawa tribe are located on the Andaman and Nicobar. Very important. And it is believed to that Jarawa people migrated to this region from either Africa or Southeast Asia. 60,000 years ago. Jarawa in Andaman. Among the following is the highest peak of Appalachian Mountain. Highest peak of Appalachian Mount Hill, Mount Albert, Mount Damavand, and Mount. क्या कहो कही जाओ जल्दी जल्दी कहो. These are previous year questions, OPSC questions. The previous year OPSC question. 11 is A. A answer देखी कि कहबनी. This is the practice. Exam रे तुमके answer करबा को थिबनी. Practice सेइठु कर better हबो. Mount Mitchell. तो देखो इठी Mount Mitchell, North Carolina रे पाइबो. So Mount Mitchell is the highest point of the Appalachian Mountain. कहलो Appalachian Mountain ना fold mountain ना कोन? Appalachian Mountain and Mount Mitchell elevation 6684 feet. और basically हमर येरु then Verkhoyansk, the lowest temperature recording station in Siberia, is situated in the basin of Verkhoyansk. समस्ते देखो, समस्ते टाइप करो. जल्दी जल्दी जवाब दियो भाई. मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ याना. Lowest temperature recording station Siberia. Verkhoyansk basically देखियो Russia, Siberia, or part of Russia. Part एडी देखो.
तुम्हें रेगुलर रिविजन करके आस मु ए सीरीजटा चलाउथी रेगुलर रिवाइज काली मु एनवायरनमेंट देवी काली इवनिंग रे 9टा बेले तुम पाखे 12 आवर अच्छी पूरा रिविजन कर दियो भल से so match the list 1 and list 2 and give the correct answer using the codes below planet planet है मार्स वेनस सैटर्न प्लैनेट याठू इजी क्वेश्चंस तुम्हें किसी पाइबनी याठू इजी क्वेश्चंस पाइबनी या भीतर मार्स याठू इजी क्वेश्चंस किसी पाइब कुह मते कुह गुड इवनिंग सुश्री कौन लेट है आम पाखापाखि 13टा क्वेश्चंस कलुनी आज जल्दी आम करुचे टिके तो मार्स तो जानिच जदि आउ किसी न जानी एति जानी मार्स तो 1 रो तो ए आउ बी ये दुटा भर ठीक अच्छी कौन मैंने भूल अच्छी ए आउ बी हेनी ये हटिगला सी आउ डी भर कौन आड़े अच्छी तो 2 हो गला एंड 4 यूरानस ग्रीन प्लानेट कह जाए यूरानस ग्रीन प्लानेट कह जाए देन आउ रहा वेनस एंड सैटर्न कौन हम वेनस इज बेल्ट प्लानेट सैटर्न इज रिंग्ड प्लानेट ओके थर्ड एंड तुम सेकेंड है फोर्थ से अनुसार मार्स इज रेड प्लानेट वेनस इज सेकेंड planet from the sun and our closest planetary and it is the hottest planet in our solar system. Sometimes called earth twin. So Venus referred to as morning star. It is surrounded by thick cloud cover, hence it is known as belt planet. एटा तुम्हें जानी नथिबो जदि जानी नथिबो जानी दियो. Although other gas are giant in the solar system, Uranus, Neptune also have rings. Saturn's rings are particularly prominent थाए सेइथिपाई ताकू रिंग्ड प्लानेट कह जाए यूरानस को ग्रीन प्लानेट कह जाए कहीं तार मिथेन अच्छी हाइड्रोजन अच्छी एंड हीलियम अच्छी दैट ग्रीनिश कलर दिए एंड इट इज द 7th प्लानेट फ्रॉम द सन ये कलर अनुसार मार्स है रेड प्लानेट वेनस है वेल्ड प्लानेट क्लाउड कवर रखी यूरानस है ग्रीन प्लानेट ओके आउ नेला रिंग्ड 2022-23 क्वेश्चंस आम 21-22 लिखुलु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सुइनसी ओके ओके को जल्दी करे एक्सुइनसी रेड सी क्यों कहा जाए located between Eastern Europe and Western Asia serves as a barrier for NATO to counter Russia. Earliest known name of the sea is Sea of Galpa. Red Sea को कहा जाए Aegean Sea also known as Black Sea, not the same as the Red Sea. Not correct. Black Sea not Red Sea. So not correct Bacharchi. Then it is located between Eastern Europe and Western Asia. Overseas barrier of NATO country and the earliest known is of Galpa. So देखो it is located can see 406 country Russia, Ukraine, Georgia, Turkey, Bulgaria, Romania. Earliest known name है Black Sea was considered sea.
which of the following statement correct not correct movie देखिए ओवरसी not correct in respect of पाटा गाय का क्रैटर not correct এটা भी अधिक yes I sir right पाटा गाय का crater is situated in Australia Far East region become focal point of studying the effect of environment climate change on permafrost. Patagaica crater is effectively referred to as the sky in the permafrost thaws release enormous quantities of organic carbons. So a region become focal point ସେଥିପାଇଁ ये question ର ପଚାରିଛି and the permafrost thaws release enormous quantity of organic carbon. Say 2 and 4 D is the correct answer. If in the Russia's Far East, not Australia, lies Batagaika crater. Here of Far East. Okay, Batagaika crater is an alarming testament of the consequence of the global warming. As the world's largest permafrost crater, its expansion serves as a stark reminder of the ongoing impact of climate change. The crater is actually known by locals, the cave in, and by scientists, a mega slump. Yeah. Match karo. Major cultural region of the and inhabitants. जल्दी जल्दी समझते छाड़ी दउची तुम्हें भल से देख आर्कटिक रीजन डेजर्ट लैटिन अमेरिका then habitants like Eskimo, the Indian Negroes and immigrant Hans, Indians and caravans. आर्कटिक रीजन रे किए रुए डेजर्ट रे को माने रुहंती आर्कटिक रीजन तो जानी थी समझते लैटिन अमेरिका रीजन रे पैसिफिक ओशन रीजन रे आर्कटिक रीजन एस्किमो शुणी पिला बेलू देन डेजर्ट रीजन रे समान डेजर्ट रीजन रे कारावान्स रीजन रे कारावान्स then for Latin America region Indians, Negroes and immigrants and Pacific Ocean region Tahiti island Tonga island भी अच्छी ये थिला D of indigenous people inhabiting in northern Canada, Alaska, Greenland and eastern Siberia and traditional other Soman and Soma are the indigenous Polynesia people island an archipelago of Polynesia who speak the Soma language. A caravan or kafila, a group of people traveling together, often a trade expedition. The caravans are used mainly. Match karo multi-purpose project in India and days of implement. Do it
Do it fast. Do it fast.